इसके ऊपर क्लिक करना है मुझे। 251 सर आपका माइक म्यूटेड है। Okay, Jai Hind. I Jai hope Hind, sir. now you can hear me clearly. Yes, sir. We've got a list of luminaries whom I must refer to. It would be bad if it's otherwise. Firstly, Shri Harshvardhan Singh Ji, the founding chairperson of this wonderful association, Prithvi Abhyudya Association of India. Mrs. Vandana Singh, co-founder, Mr. Lalit Kumar Sharma, Deputy Director. I hope all of you are here because I can't see most on the screen. Later on, after this, I would try to hunt out each one. Mr. Sunil Kaushal, I can see him, Managing Director. Mrs. Vishakha Gupta, we have interacted yesterday. Dr. Preeti Chittara, Joint Director. Mr. Aman Kumar, a National Media Advisor. These are some of the members and other members, of course, from the wonderful organization that is headed by Mr. Harshvardhan. Firstly, let me thank you as an organization for doing such great work. Keep it up. More after I get to know you better. Dr. Wali sir,
Colonel Agarwal, Colonel Ashok Moore, Major Sangroya, whom I can see on the screen, and the students and people probably joined from across India and from abroad. Probably I was told that they were joined. And other ex-servicemen brothers, my officers, JCOs, and Veer Jawano. Happy Republic Day to all of you. I've been asked by Shri Harshvardhan to talk about my experiences, but first let me start by saying how honored I feel to be amongst you. On the one hand, we have got the students and teachers. Okay, हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो और भी अच्छा होगा शायद. बच्चे और जो स्कूल के बच्चे हैं और अध्यापक जो ज्वाइन किए हुए हैं यहाँ पर, जो कि देश की नींव डाल रहे हैं. एक तरफ वो है, एक तरफ यूनिफॉर्म में जो थे और अभी जो एक्स सर्विसमैन है जिन्होंने कि इस नींव को, इस देश के नींव को हिलने से बचाया है, जिन्होंने इसकी रक्षा की है. दूसरी तरफ वो है, और तीसरी तरफ PAAI जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस बना हुआ है और इन दोनों की मदद कर रहा है. I feel proud to be and honored to be amongst you. मेरे एक्सपीरियंस के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग जानते हो कि मैं एविएशन इंजीनियर था और इसके पहले कि मैं किसी जैसे मेजर संग्रोया जैसे किसी एक हालात में डाला नहीं गया था. तो मैं मेरी I was born with the Army Aviation Corps and grew along with Army Aviation Corps. और जो भी आर्मी एविएशन कोर अभी दिख रहा है मेजर संग्रोया, whatever army aviation you see now was based on the foundation that me and my classmates had that first course, right? So I didn't get much time to be put into the CIOps environment like you people have been lucky enough to do that. So I leave the upbeat and experiences recounting to you gentlemen who have seen blood and gore. Instead, मैं जो बताऊंगा 36 साल ट्रेनिंग के साथ 40 साल का जो एसोसिएशन है आर्म्ड फोर्सेस के साथ, वो बहुत बड़ा अरसा होता है. उसमें नस नस जान सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस के और एक जवान के. तो मैं ये बताना चाहूंगा क्योंकि अगर बच्चे हैं यहाँ पर, बच्चे नहीं भी है तो एडिटर्स बहुत हैं यहाँ पर, तो आप लोग जाके बच्चों को जरूर बताना कि ऐसी कुछ चीजें हैं एक जवान में या इस ऑर्गेनाइजेशन में, आर्मी नाम के, आर्मी नेवी एयरफोर्स नाम के ऑर्गेनाइजेशन में, जो जिससे कि ये देश सीख सकता है, अपना सकता है और ग्रो कर सकता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द डिसिप्लिन. डिसिप्लिन अगर बच्चे यहाँ पर है तो सुने बच्चों, डिसिप्लिन इज जो काम मुझे करना है वो सही ढंग से करे और हर बार करे सही ढंग से. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है, तब करे जब कोई नजर रख रहा हो हम पे, और तब भी करे जब कोई नजर नहीं रख रहा हो. दैट इज व्हाट इज डिसिप्लिन, विच इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो. कोई अगर तुमको देख नहीं रहा है, कोई परख नहीं रहा है, फिर भी अगर आप अपना काम ठीक तरह से कर सको तो यू आर मेंटेनिंग डिसिप्लिन. दूसरी चीज जो मुझे एकेडमी ने सिखाई थी कि अपना मन जो है, अपना शरीर, माइंड एंड बॉडी, दीज आर बोथ अमेजिंग गिफ्ट्स ऑफ गॉड. कुछ भी करवा लो इनसे तो करने को तैयार है. स्टील बॉडी हो सकता है. वही बॉडी जब जिम्नास्टिक्स में जाता है तो रबर बॉडी बन जाता है. कठोर दिल हो सकता है जब दुश्मन का सामना करते हैं. वही जब आपदा आती है हमारे देश पर, वो मौन सा बन जाता है. कंपैशन भी होता है. सो माइंड एंड बॉडी इज एन अमेजिंग मैकेनिज्म व्हिच वी, if we condition properly, it will stand in good stead for us.
किसी भी जवान से अगर आप पूछो तो प्रायोरिटीज उसके बिल्कुल सही, देश पहले, अपने साथी, अपने सबॉर्डिनेट्स, अपना फैमिली दूसरा, और खुद का कंफर्ट लास्ट में आता है। वरना क्या बात थी कि ये छोटा लड़का जो है मेजर अनुज सूद, जो कि हमारे साथ ही पला बड़ा है, उसको क्या जरूरत है जाके वहां पर अपनी जान देने की? उसकी फैमिली, उसकी नई नई शादी हुई थी, लेकिन वो सबको परे करके वो जाके उसने जाके सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री, because that was the only fire within him at that particular point of time. And last of the things which I would like to highlight is samabhav, equality. जाति नहीं, सत्ता नहीं, धर्म नहीं, कुछ नहीं, हम मतलब किसी का भेदभाव नहीं होता है आर्मी में। एटलीस्ट आर्मी में तो मैं कह ही सकता हूँ, सारे आर्म्ड फोर्सेस में। मेरे यूनिट में उधमपुर में बड़े से बड़ा स्टेशन गुरुद्वारा था, स्टेशन चर्च था, स्टेशन मस्जिद था और स्टेशन मंदिर था, सब आमने सामने। हमने सारे रिलीजियस फंक्शंस मनाए। There are so many instances in the army where a person from a particular religion has led a pure troops of another religion, and they have done stunning things, extraordinary things. So there is nothing of the sort of religion or caste or creed that we follow in the armed forces. In fact, आप लोगों को शायद वो कहानी पता होगा कि एक बार केबल कार हिमाचल में कहीं था, केबल कार टूट के लटक गया था, गिरने वाला था, with all the people inside. और लोगों ने वहां से मतलब they started praying to their gods, माता शिव जी, गणेश जी, हमें बचा लो। आ गए, भगवान आ गया हेलीकॉप्टर में। जो चला रहा था फली मेजर, जो कि पारसी थे, जिसने हाथ देकर एक एक आदमी को अपने हेलीकॉप्टर में खींच के लिया, वो था क्रिस्टो, मेजर क्रिस्टो। ही वाज अ क्रिश्चियन। तो भगवान ये नहीं देखता है कि किसके थ्रू वो काम करा लेगा, ठीक है। सो religion, caste, creed and all is something which is extraneous to your being an Indian. You are an Indian first. इतना याद रखिए। कंपैशन में कह रहा था ना कि जो बहुत ही कठोर दिल होता है वो कंपैशनेट कैसे होता है। मैं कलकत्ता में था जब सिक्किम में अर्थक्वेक हुआ। जवान से बात हो रही थी कि कहाँ पर है तू? मैं साहब लाचन के आगे। क्या हो, क्या कर क्या रहा है? मैं साहब यहाँ पर बचाने की कोशिश कर। तेरी फैमिली तो थी, कहाँ गई फैमिली? चुंगतांग में है, चुंगतांग पीछे ही है। मतलब वो कैसे है? बस साहब एक बार पता लगा कि वो सेफ है, उसके बाद पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है क्या है। ये लड़का आगे लाचन में सभी को बचाने की कोशिश में, उसको अपने फैमिली के बारे में पता नहीं है, राइट? सो mission has to be completed. Whatever mission he is on, he wants to complete, and then he thinks about his family. कश्मीर में, J&K में जब फ्लडिंग हुआ था श्रीनगर में, उसने देखा नहीं कि यही हाथ जो पकड़ के वो खींच रहा है बोट के अंदर, उसी हाथ से उसको पत्थर मारे गए। वो नहीं देखता है, भारतीय है, खींचो बस, ठीक है। So these are the things which we can learn as a nation from us. मैं जब यहाँ पर चिंचड़ में एक फिजिकल मीट ESM का अटेंड करने गया तो देखा कि बहुत सारे 100 से ऊपर ESMs in the small place like चिंचड़। I was so glad. That is the time when I thought that India is in safe hands, because if there are so many ESMs in a small place like this, ESM must be spread, ex-servicemen must be spread all across the country. The country is in safe hands. हम बच्चों को आप एडुकेटर्स ने सिखाना बहुत जरूरी है कि वी शुड बी वर्दी ऑफ अ सोल्जर्स सैक्रिफाइस। सोल्जर जो सैक्रिफाइस करता है हमारे लिए करता है, बट वी शुड बी वर्दी ऑफ दैट सैक्रिफाइस। बच्चों को ये भी बताना जरूरी है कि द ओनली वे इन विच दे कैन डू एट दैट एज इज दैट व्हाटएवर दे डू
they should prove to the best of their ability and become good citizens. Or that's all I wanted to say. That this is the gist of the armed forces, the essentials of the armed forces. If we imbibe as a country, we will do very well. And on behalf of all the people here who are online, I would like to thank all the officers, JCOs, and Jawan for their contribution to this country. Jai Hind, Vande Mataram, stay safe, stay healthy, and be of use. Thank you so much, sir. That was so inspirational that my pen did not stop writing. Okay. And then I had to say that I had to listen as well as write. So it was getting difficult for me कि सुनूं कि लिखूं. But then कुछ takeaways जो शायद मैं एज अ प्रिंसिपल अपने बच्चों को जरूर देना चाहूंगी, और मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि आप पूना में बेस्ड हैं. आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप टाइम निकाल पाए जरूर हमारे बच्चों के पास आए, उन्हें इंस्पायर करें, क्योंकि मेरा स्कूल भी पीसीएमसी एरिया में ही है, तो जरूर चाहूंगी कि आपके दर्शन हमें हो. जैसा आपने बोला, हैविंग अ बैलेंस इन द माइंड एंड बॉडी, not dividing on the basis of caste, creed, religion, but on the basis of humanity. Everybody has to be treated only as a human. And the students have to understand they have to become worthy of a soldier's sacrifice. That reminds me of a few lines by Kumar Vishwas. But then before that, I would request Harshvardhan sir to complete a little gesture of our honor and respect to you. As a guest of honor and speaker, we give a certificate of recognition to Major General J.N. Nair, who does not need any recognition. Thank you so much. Thank you. Accepted with gratitude. Thank you. We'll mail it to you, sir. So as I was saying, मुझे कुमार विश्वास की कुछ पंक्तियां याद आ गई. दौलत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, बस इतना अता करना, चाहे जन्नत न अता करना मौला. शम्माए वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों में गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों में गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो. तो सर, आपसे हमने यही सीखा कि तिरंगा सबसे ऊपर है और बाकी सब चीजें हमें भूलनी चाहिए, सिर्फ देश और देश पे. थैंक यू सो मच सर. मैं थोड़ा सा क्यों जंप डिग्नेटरीज को सॉरी बोलते हुए क्यों जंप करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अब हम डॉक्टर वली को सुने, क्योंकि जब मैं उनकी प्रोफाइल मैंने पढ़ा तो मैंने कहा नहीं, सर आर्म्ड बैकग्राउंड से हैं, डॉक्टर वली कुछ उसी से रिलेटेड है, पूरा एग्जैक्टली नहीं, बट अगर हम ऐसे डाइवर्सिटी के साथ चलेंगे तो थोड़ा मजा आएगा, सुनने में, समझने में, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. Professor Dr. Wali is an Indian cardiologist and a former honorary physician to Sri R. Venkataraman. His first assignment as physician to the President of India was with Sri R. Venkataraman at the age of 33, ladies and gentlemen. Can you beat it? At the age of 33 only, making him the youngest physician to serve an Indian president. He is the only physician to have served 3 Indian presidents. The government of India awarded him the 4th highest civilian honor, the Padma Shri, in 2007 for his contribution to Indian medicine. Your thoughts and views. We are honored to have you here. Sir, Dr. Wali. Thank you, Vishakha ji. If I am audible? Yes, sir, you are very much audible. Yes, you have really made this program a very spiritual one and very emotional one. And first of all, I congratulate my country, my co-panelists, my guests,
my organizers and you all a very, very happy and very, very brave and a very, very prosperous and enlightening Republic Day for the whole country, because we were enlightened by Nair Saab recently. Major General Nair spoke very nicely, and all of you like Lalit Sharma ji, all who are present today, they have made this function a grand. And Dharamchand ji, Agarwal Sahab, Ashok ji, C.K. Sood ji, L.K. Bhatia ji, Sulekha ji, and Agarwal sir, and all whom I cannot name, and I will say them sons and daughters, because India is one of the oldest civilizations in the world with a kaleidoscopic variety of rich cultural heritage. You go anywhere in the world, any country, we have just either blacks and whites, either bread or butter, either potato or chips, fish and chips. But you name in India, you have everything. So it's a kaleidoscope of culture. It's a rich heritage, and what we learned from our gurus, our religious books, Ramayana, Mahabharata, and what we fight today for the freedom, what we have fought, all the teachings are given by us, by Lord Krishna in advance. So these are the things which have been taught to us. Even in medicine, Charak and Susutra has taught to us what the Western world has stolen and translated into their own language. You know, India has our universities, Takshashila, Nalanda, and everything you see. You see, I have been fortunate to serve 3 Indian presidents, so saw 3 great colors, and in staying in Rashtrapati Bhavan, attending all the functions, and attending so many meeting of the retreats, so many Independence Day lectures by the prime ministers, so many Republic Day parades in which I used to organize medical coverage for the visiting dignitaries and the honorable presidents. Even when Mr. Barack Obama came, I had to sit on the dais because it was raining that day, and our president recently had a cardiac problem, President Pranab Mukherjee, sir. So all this, if you summarize, India stands apart from the rest of the Asia, rest of the world, marked off as it is by mountains and the sea, which give the colors, which give the country a distinct geographical entity, bounded by the great Himalayas in the north. It stretches southwards, and at the Tropic of Cancer tapers off into Indian Ocean between the Bay of Bengal and the east, and the Arabian Sea on the west. So it's geographically, nature has given us so many things. I will be very short because I have to admire your efforts, and especially I have to be disciplined. As was told, you started very nicely with Gitanjali's line, in the 7th class. Our principles to stand 15 years of independence. I remember still. मुश्किल से मिली है, हमने आजादी के लिए बहुत कुर्बानी दी है, हमको इसको बचा के रखना है. At that time as a child, I never understood what they were talking. Now when I'm seeing day to day what's happening around the world and around the India also, our neighbors, what they are doing, how they are planning to hurt this
very good nation with very good motherland of ours, I realized that what they were saying was correct. And as per Mrs. the far sad, glorious vision I see, and the terror and the tumult of the state shall cease, and the life be refashioned on the inwills of peace, and your love shall offer memorial thanks to the comrades, like we just had one, to the comrades who brought on the dauntless ranks to the country. And you, however, the deeds, you honor the deeds of the dauntless, or remember the blood of my martyred sons, as was talked just now. So, what all this was happening, this is all in love of the fortune to be there with such great people, such great martyrs, some of them. And in my family, my wife's Nanaji was part of Netaji Subhash Chandra Bose army. And I had met him, I had served him, I had was studying in Kanpur, Dr. Lakshmi Sehgal. So we are talking about Subhash Chandra Bose ji little bit because we owe a lot. We owe a lot to him. Our independence, and I would say, celebrate Azadi, our independence. Azadi is the right word, I think. Independence is a very vague and generalized word. So Azadi has a heavy word, heavy meaning. सो हमको इस आज़ादी को बचा के रखना है और मैं से और सीखूंगा, आपको सुनूंगा। अंत में 4 पंक्तियां ये फील करता हूं, जो मैं प्रैक्टिस करता हूं, उसको दोहराऊंगा। ये मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, ये फूल के लिए है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। ये जो लाइनें हैं ये इसलिए हैं क्योंकि हमको चाह जो है वो असल देश के लिए कहा है कि चाह नहीं सम्राटों केशव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य मुझे तोड़ देना, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना, तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। और जो हमारे वीर अनेक बैठे हैं उनको समर्पित करता हूं मैं ये पंक्तियां, और उनको सैल्यूट करता हूं, उनको सलाम करता हूं और दुआ करता हूं कि हमारे इस देश को, इस देश की आज़ादी को किसी की नजर न लगे और हम सब प्यार मोहब्बत से इस देश में रहें, इसको समृद्ध करें और एकता, अखंडता और सबसे बड़ी बात जो नायर साहब ने बताई है, अनुशासन के साथ हम भारत को महान बनाएं। किसी देश में आपको ये नहीं मिलेगा महान वर्ड, ये सिर्फ हमारे देश में मिलेगा, मेरा भारत महान। आप किसी देश के स्लोगन में नहीं पाएंगे ये, एंड इसीलिए लिख के भी गए हैं अंग्रेज, सो में भी गए। थैंक यू सो मच सर, आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए अभी भी है हमारे पास। Like you have asked us and from us to pass it on to our future generations, like what you're passing to us, what you've passed to generations. I think everyone here would pledge that we would try our best to carry this legacy forward. Thank you. और जो महान बनाने की बात है, आजादी की बात है, सबसे पहले तो शायद हमें बच्चों को ये समझाना है कि ये आजादी आसानी से नहीं मिली है, क्योंकि बच्चों ने आजाद हिंदुस्तान की हवा में सांस ली है। तो उनको ये समझाना जरूरी है, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, बेशक। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। क्योंकि बच्चों को ये सब चीजें विरासत में मिली हैं, तो शायद उन्हें इस चीज की वैल्यू नहीं पता है कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से, और ये हम सबके पूर्वजों के साथ होगा कि हम सबके पूर्वज लड़े हैं इस आजादी के लिए, जाने दी हैं आजादी के लिए, घर परिवार के लोगों को सैक्रिफाइस किया है इस आजादी के लिए। और ये चीजें अब हमें बच्चों को शायद फिर से याद दिलानी पड़ेंगी कि वो अपनी, और ये हम रिपब्लिक डे पे बेस्ट याद दिला सकते हैं ज्यादा। Thank you, sir. Your presence has added flavor. To see it, they can always embrace it, hold it, see it. और हम लोगों को भी बचपन में उसी जीनिप से लिखना कैलीग्राफी में बताया जाता था। जी। और उसकी बेहतरीन जिसका जिक्र और प्रेम बिहारी रैजादा साहब की ऑयल ट्यूशन लिखे तमाम हरे ग्रहों की और इंडिया की आर्ट बनी हुई है। ऐसा किसी देश में दुनिया में नहीं। Thank you so much. एक्सपीरियंसेस हैं जो आज हमारे सामने आ रहे हैं। और ये एक्सपीरियंसेस हमें बहुत लेसन्स देके जा रहे हैं, लाइफ लेसन्स दैट वी आर गेटिंग। academic quota. So he's not some forces, and now he's serving the country in the field of education. So welcome, sir. And we are all to hearing you. Thank you so much. Jai Hind, ma'am. Major Soya and Colonel Moore and many other educators who are present today. From my gratitude and
the platform luminaries. सबसे पहले मैं सभी को, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, day की I was told that I have to share my always for others of it was so so sometime later I'll share, but I will certainly share some takeaways in the time allotted to us, some takeaways from war and from my experience in the armed forces. Like I was wearing the olive green uniform, the uniform of armed forces, right from the age of 11 at RIMC, Russian Military College, which is one of the finest in the world, and we are celebrating this year 100 years of our existence in Dehradun. Then of course in the system, I joined National Defense Academy at Khadakwasla, Pune, and passed out from IMA in Regiment of Artillery. और उसके बाद मेरे को सेना ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ मैंने सीखा. कश्मीर में I had served for good about 11 years fighting terrorists. I have been part of Rashtriya Rifles. I have been part of Black Cat Commandos and instructor NSG, जिसको कहा जाता है. I have served in special forces. So lot of experience, and along with the experience of seeing all this action, I had the opportunity to do a lot of education, academics, do my MTech and other things also. पढ़ाई वढ़ाई भी साथ साथ चलती रही. So लेकिन ये तो पार्ट एंड पार्सल फौज का होता ही है. बट मैं जो मैं टेक अवेज की बात कर रहा था, मैं ये जैसे डॉक्टर वली ने भी कहा कि हमारे देश में हमें ये आज़ादी बचा के रखनी चाहिए. हमारी आज़ादी बची रहेगी, कहीं नहीं जाएगी आज़ादी, क्योंकि हम एक चीज मानते हैं, जैसे कि फौज में हम कहते हैं ना, किसी भी फौजी का कोई धर्म नहीं होता है, एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होता है. सिर्फ अगर धर्म होता है तो वो होता है बीइंग एन इंडियन, और एक ही जज्बा होता है देशभक्ति का. हमारे इसका सबूत, इसका जीती जाती मिसाल जो है वो है, आप हम किसी भी कैंटोनमेंट एरिया या आर्मी एरिया विजिट करेंगे तो वहां पर एक बड़ी यूनिक चीज होती है जिसको बोलते हैं सर्व धर्म स्थल. यानी कि एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर वी हैव टेम्पल, वी हैव मॉस्क, वी हैव चर्च एंड वी हैव गुरुद्वारा. मेरा जब कमीशन हुआ था, प्रेसिडेंट्स कमीशन वे बैक इन 80s, तो सबसे पहली चीज, क्योंकि मेरे ट्रूप्स खालसा हैं, सिख हैं, सो 62 मीडियम रेजिमेंट बोफोर्स रेजिमेंट है, तो सबसे पहली चीज मेरे को गुरुद्वारा में ले जाया गया. मैंने वहां पगड़ी पहनी, सरोपा प्रेजेंटेशन में कड़ा पहनाया गया, एंड आई हैड टू पिक अप ऑल द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ माय ट्रूप्स, द पीपल whom we command, and that becomes your religion. Probably when I served my unit, I visited Gurudwara more than I even visited temple. In fact, temple और गुरुद्वारा is all same thing. So सर्वधर्म स्थल का कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक है, और जिसे कैसे कहते हैं ना कि हम हर सैनिक अपने धर्म की भी पूजा अगर करता है तो दैट इज हिज पर्सनल बिलीफ, पर कंट्री इज सुप्रीम एंड ऑलवेज अबव एवरीथिंग. और इसमें एक बड़ा योगदान है हमारे, जो जब हम पासिंग आउट परेड होती है तो वहां पर IMA में एक चैटवुड हॉल है, और चैटवुड हॉल का एक मोटो होता है, चैटवुड मोटो, जिसकी पहली लाइन ये कहती है कि देश की, द सेफ्टी ऑनर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, द वेलफेयर एंड ट्रेनिंग ऑफ योर ट्रूप्स कम्स नेक्स्ट. यानी कि देश की सुरक्षा, देश की ऑनर सब सर्वप्रथम है, उसके ऊपर कुछ नहीं है. उसके बाद आपके जो ट्रूप्स आप उनको कमांड करते हो, उनकी रक्षा करना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनको प्रशिक्षण करना आपका दूसरे नंबर का धर्म है. और तीसरे नंबर पर आता है योर पर्सनल कंफर्ट, सेफ्टी कम्स लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम. यानी कि हमारा खुद का जो कंफर्ट्स हैं, सेफ्टी है, वो लास्ट और ऑलवेज. एंड दीज 3 लाइन्स आर सॉर्ट ऑफ वी कैन से द मोटो और क्रेडो ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. और ये हमेशा हमारे दिमाग में हमारी ट्रेनिंग के वक्त इतनी अच्छे से बैठी होती है कि युद्ध हो या पीस टाइम हो, हम ये कहीं ना कहीं हमारे DNA में इनग्रेन हो जाती है कि हम इसको फॉलो करते ही हैं. और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि आज जब हमारे प्रधानमंत्री नेशनल वॉर मेमोरियल में गए, क्योंकि अभी अमर जवान ज्योति नेशनल वॉर मेमोरियल में है, तो वहां पर करीब 30,000, अराउंड 28,900 लोगों के नाम इंस्क्राइब्ड हैं, जिन्होंने 1947 के बाद हमारे देश के लिए, हमारे लिए अपनी सुप्रीम सैक्रिफाइस किया. तो मेरा एक जो यहाँ पर, क्योंकि एजुकेटर्स का बहुत बड़ा ग्रुप है,
एकेडमिशियंस हैं, एजुकेटर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, आपकी जो ओपनिंग स्टेटमेंट के वॉर मेमोरियल, शहीद स्मारक पर जरूर विजिट करें, स्पेंड सम टाइम। जब close your eyes, imagine कि how much blood and how much sacrifice these people around for more भी जाए जो नहीं रहे हैं, तो अपने शहर का वो लाइक ए तीर्थ स्थान फॉर ईच एंड माय फर्स्ट रिक्वेस्ट टू एवरीवन। एंड सेकंड, जो कि हम क्या कर सकते हैं देशवासियों के लिए, बहुत लोग पूछते हैं क्या हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्या हमें झंडे लगा के और ये करना चाहिए। किसी फौजी की ब्लड डोनेशन, एवरी सर्विंग सोल्जर वांट्स जस्ट, बहुत कम शॉर्ट नोटिस पा रहे होते हैं, छुट्टी से अपनी यूनिट पे जा रहे होते हैं, टेम्परेरी ड्यूटी जा रहे होते हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं होता है। आप कहीं भी अगर देखते हैं, अगर आप पहचानते हैं, जस्ट गिव मी अ लिटिल रेस्पेक्ट, just appreciate his hard work, whatever he is doing for us, because he has chosen that life. Yes, he has chosen that life. Each one of us has roots who are soldiers who are still serving. अब एक टाइम पे कारगिल युद्ध, जो कि आज से तकरीबन 23 साल 23 साल पहले 99 में और 26 जुलाई को खत्म हुआ था, और विजय पराक्रम के नाम से जाना जाता है, और विजय के नाम उसका जो लास्ट डेट थी। सो ये एक्चुअली एवरेज एज करीब 23 से 24 साल थी। स्कोर्स ऑफ पीपल गॉट इंजर्ड, बट वी टुक बैक एवरी इंच इन स्पाइट ऑफ, जबकि हमारा दुश्मन हमसे बेहतर पोजीशन में था, हमारे से हाइट्स पे जा रहा था, और जब युद्ध में हमारे विपरीत और प्रतिकूल टेलिंग दोस प्रॉब्लम्स, बट एक क्वेश्चन जो मेरे सैनिक युद्ध क्षेत्र में जाता है, तो उसको कहूंगा जी हाँ, बिल्कुल डर लगता है। वली साहब कह रहे हैं गर्दन हिलाने की, शायद नहीं लगता है, नहीं लगता है। डर किस बात का होता है कि अगर वो तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उस वक्त उसके सामने कोई ऐसा देशभक्ति का बहुत बड़ा जज्बा नहीं होता है। किसी भी सोल्जर के लिए मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, 3 चीजें: नाम, नमक और निशान। नाम इज सेलाइट, क्योंकि हमारे सोल्जर्स गांव से आते हैं, विलेजेस से आते हैं, और गांव में बहुत क्लोज नेट कम्युनिटी होती है। युद्ध में उसकी ये खबर आ गई कि उसके साथी ने बताया, नमक इज लॉयल। पलटन में हूं, उस पलटन का मैंने नमक खाया है। द रेजिमेंटल कलर्स इज द थर्ड कलर, निशान, मतलब हमारी पलटन का जो निशान होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसलिए बहुत
इंपॉर्टेंट चीज है कि उस वक्त कोई उन्माद नहीं होता, देश नहीं होता. We are just very, very, and not so glam platforms. They are happening. So fear of unknown is something which is major fear which we have. Okay. इसके अलावा एक और चीज है, जैसे कहते हैं ना कि सैनिक इसलिए लड़ता है, उसे अपने देशवासियों से और अपने परिवार से बहुत ज्यादा, और परिवार से प्यार है, पीस, लव इज, उन सभी सैनिकों के आखिरी सांस, जो उसकी आखिरी सांस है, जिसने लड़ते लड़ते अपनी जान की कुर्बान करी, उसके लिए वो, तो हमें सैनिक लोग संगरिया इस बात से एग्री करेंगे, रिस्पेक्ट और नमन करना चाहिए इन सैनिकों के परिवार का. कि जिन्होंने पहली चीज, पेरेंट्स ने हमें मोटी और अपना काम करो, और शहीद हो जाते हैं. मेरे को कितने ऑफिसर्स हैं who have laid down life, उनकी वाइफ्स ने, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, आपको सभी का, आपको जानते हैं, उनकी वाइफ्स ने ट्रेनिंग करके पति का, दो सभी घर वाले और गांव वालों का उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उस सोल्जर का है, सभी देशवासियों का. अदरवाइज ए सोल्जर कैन नेवर fight a war. Believe me, he can never fight. So that is what I am saying. So that what we need today in our country, that all, each and every soldier who has fought. As my experience of having Divas on 26 July on a national level, और फिर कभी हमारे पास थोड़ा सा और समय होगा तो मैं जरूर जरूर अपने स्पेसिफिक कारगिल ऑपरेशंस के कुछ एक experiences, and I was Pune Island. I'm not, yes, son of your place, and share my be part of armed forces. You know, it is, we are a bit selfish, you know, since we are growing little old, we need the younger generation to protect us. So if younger people join armed forces, we feel we will be safe. Future. So that is sure, it will be my pleasure too. And in the end, I would like to express my group and given me this platform to interact and share my platform with such luminaries like Dr. Wali, General Nair, and everyone, each one. I can't name one or two of this thing. So they're all fantastic people, and they have done so much for the country, Republic Day, and we'll have many more such. Thank you very much. एक ही बात कह रहा था, हमें मिली वीर सैनिकों के बलिदान से. Thank you.
दसों आजादी से उसके आंचल से छोटा सा ये संसार है। हमने न कभी हिंसा के आगे पूछो तो विश्व हमारा ही वीर सिपाहियों के बलिदान से, वीर सिपाहियों के बलिदान से। और जहां तक सर की बात थी कि सर ने जैसा बोला कि हमें छोटे छोटे जेस्चर्स ढूंढने चाहिए कि किस तरह से हम अपने सिपाहियों को रिकॉग्नाइज करें। तो अभी कोरोना से पहले एक पे सिपाही मिलते थे, तो अभी प्लेटफॉर्म के थ्रू या और प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी ये बात हम फिर से फैलाने की कोशिश अगर हमारे बच्चों का, तो जैसा आपने सिपाहियों को जरूर अच्छा लगेगा, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए बट चाहिए। ये एक छोटा सा होगा, धन्यवाद।